भंते जी ने सुझाव दिया था कि हम लोग एक दो उदाहरण के माध्यम से इन संज्ञाओं को अलग अलग देखने का प्रयास कर सकते हैं। तो दो उदाहरण मैंने आइडेंटिफाई किए, जिनके आई प्रेजेंट टू यू एंड we'll see and then have a discussion कि हम उसको कैसे किस प्रकार उसको देखते हैं। उदाहरण देने से पहले थोड़ी देर फोकस कर लेते हैं, माइंड को कलेक्ट कर लेते हैं, गेट टू प्रैक्टिस समाधि फॉर सम टाइम, just for about 10 minutes we'll practice.
So we'll do some to हमने संज्ञाओं पर चर्चा की है और संज्ञा वेदना और जो उसके प्रति प्रतिक्रिया उसको ठीक से उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पहला उदाहरण में प्रेजेंट यू द स्टोरी इन ब्रीफ, आप फिर उस पर विचार करिएगा। They're all true incidents, so I didn't have to remember them or have to make them up. पहला इंसिडेंट आपने अगर जान अमरू का प्रवचन सुना हो तो जान अमरू उसको अपने एक प्रवचन में रिकॉल करते हैं। अब जो लोग धम्माराम आए हैं, खासतौर पे जो लोग थाईलैंड गए हैं मोनेस्ट्रीज में, आपने देखा होगा कि हर एक भिक्षु जब भोजन करता है, खासतौर पे चाहे वो यंग भी हो, उसके साथ ही सुंदर सा पात्र रख दिया जाता है, वेरी ब्यूटीफुल शाइनिंग ब्रास पॉट, जिसमें कि वो भोजन करते समय उसमें से रिफ्यूज निकलता है जो खाने योग्य नहीं होता या खाने में कुछ खराबी होती है तो उसमें डाल देते हैं। यूजुअली कॉल्ड एज स्पिटून, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, जिसमें थूक डाली जा सके। तो धम्मावाल में भी कई बार रखा जाता है सीनियर्स के साथ, ताकि जैसे किसी को अगर जुकाम वगैरह हो रहा है तो ये टिश्यू and he covers his nose and then he puts it in there. तो ये बहुत सुंदर होते हैं, आपको ख्याल आएगा। तो कुछ यंग अर्ली डेज ऑफ अमरावती, कुछ भिक्षु गए होंगे और थाईलैंड से उसको लेके आए होंगे उनको, तो बहुत सुंदर लगा उनको, यंग पीपल। और उसको एक को उसमें उन्होंने फ्लावर पार्ट की तरह उसमें फ्लावर्स डाल के श्राइन पे रख दिया, क्योंकि इट्स वाज वेरी ब्राइट एंड शाइनिंग। So that has been a practice for many months, and it was perfectly normal with everybody. कुछ समय बाद थाईलैंड के एक वरिष्ठ भिक्षु वहाँ आए, तो जब वो श्राइन रूम में गए और बैठा वहाँ पे, तो he was uncomfortable, और उस समय कुछ नहीं कहा उन्होंने, but people could see that he was not feeling, he was so cheerful and glowing face when he came, and then suddenly he felt uncomfortable there. जब वो सेशन पूरा हो गया, सब लोग गए, तो शायद अजान अमरू ने यंग मॉन्क एट दैट टाइम उन्होंने पूछा होगा, बनते seemed very uncomfortable in the shrine room. तो eventually he told him, हाँ थोड़ा सा आपने वो स्पिटून को श्राइन रूम में रख दे, हम उसको एक्चुअली इट इज मेंट फॉर throwing away things, और आप उसको फ्लावर रख के वहाँ पे सजा रहे हैं। तो बाकी भिक्षु से उनको भी लगा, बट दे कुडंट अंडरस्टैंड कि क्या कह रहे हैं, व्हाई इज देयर एनी ऑब्जेक्शन टू दिस। So now, without going into merits of the case, what was the sanya with which the English bhikkhus were looking at that stuff, and the Thai bhikkhu was looking at the stuff, and the senior bhikkhu, very senior bhikkhu, I think Ayana Sumendu or some must be there, he just smiled and didn't say anything. तो उसी चीज को तीन तरह के लोगों ने देखा, and they had different response to that. So what was the vedana, what was this vijnana, what was the perception? Let us try to very simple example ताकि वो clear हो जाए।
थोड़ी देर शांति से आप लोग उस पर विचार कर लें. It's quite straightforward, but good to use this as an example to understand.
So Dharsab, just with your permission, briefly, मेरा बेसिकली हम सबको encouragement ये है कि आज सुबह जो हमें धर साहब सवाल पोज करेंगे, हम अगर हमें कुछ certainty नहीं भी है तो भी हम we take this opportunity to respond, क्योंकि बेसिकली आइडिया ये है कि अगर हमारी कुछ समझ unclear है तो इस माध्यम से हम उसको क्लियर कर पाएं. So if we take refuge in the security of silence, तो वो मकसद एक तरीके से हल नहीं हो पाएगा. तो मेरा encouragement हम सबको including myself ये है कि हम इस मौके को लें, especially अगर हमें uncertainty है तो हम ज़रूर उसको express करें, just so that we are able to truly take this opportunity. So Dharsab, sorry, just before we proceed, I thought it's useful to just say that. But we'll give a few minutes and now we can. Somebody should coordinate the discussion. I would like to be silent, sit and see. So maybe Bhanteji, I can request you. Sir, may I attempt? Please go ahead. Please go ahead. There's no. I was half a mind कि breakout group बना के करें या इकट्ठे करें. अगर आपको लगता है उसमें ज़्यादा सहूलियत रहती है, we can do that also. But then every time to communicate, you'll have to come back and give another example. मुझे लगा इसी में कर लेते हैं. Let us be open. इसमें क्या दिक्कत है? I mean, if I say something which is not correct, how does it matter? That's an exercise in reducing atta bhava. So we should see it in that manner. So it doesn't matter. Ji, please go ahead. Yes, sir. So when monks come in, they see the thing that which is different from other flower pots, different from candles, different from other things. That is, just seeing that thing is Chakshu Vinyan. And then they recognize the monk. At least I'm talking with respect to a monk who commented. He recognized that thing as a spittoon. Then also recognize that it is used as a flower pot. So these are two perceptions: recognized as a spittoon, then recognized it is used as a flower pot. Then one more perception, कि spittoons are not to be used as flower pot. So there is a conflict कि जिसके लिए यूज किया है वो मेरी संज्ञा से अलग है, which gives the unpleasant feeling. Up to this point, I think the monk who commented and the monk who smiled, यहाँ तक I think it would be same. And after that, the perception of the monk who commented could be कि this needs to be corrected. People needs to be told कि this should not be used here. And maybe the monk who did not commented, there could have been a perception कि okay, they use this spittoon as a flower pot. Maybe they are ignorant or maybe they don't know about it. So let it be. So that's my assessment, sir. Good attempt. Very good. Very good. How about the fact that it was being used for months without any problem? No. Maybe somebody else can try. कई महीनों तक यूज तो हो रहा था, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी. It's so beautiful. अगर आप देखेंगे, they're so beautiful and they in fact look like that. They're in this shape. Don't have it here. Maybe Anteji can ask how to bring one and show it to us. Yeah, this is basically when you say that there was no problem initially, it's all the conditioning which plays a very important role, because spitting by and large in the Western culture is not prevalent. I mean,
they would not do like that. And in other Asian countries, we do have this spitting as a problem menace also, and it is a cultural orientation that there is a spitting pot and the old people would spit in that, or it's something which perhaps not the monks in Amravati, they would have been there in Thailand and would have gone through this, would have seen it, and but somehow they developed a perception that this could be used in a better manner. So that is how because of their previous conditioning, and because they were not using it for spitting at all, so they put it the use of putting flowers in that, and it continued because they developed that this is looking very fine, and so therefore it is from that point of view they were quite happy with it. But now if a monk comes and he has a conditioning of that sort, that this is a pot which is meant for spitting, and how can they put it? No, it's very strong opinion about it. When you have a very strong opinion about something, then one gets disturbed about it. So that disturbance did not happen to the monks there, and the senior monks still continued to smile, because perhaps they in their own way, their perception, they felt that this monk needs to get out of it. And this is the clinging basically that he had developed towards that particular spitting pot, that this is meant only for this, it cannot be used for anything else, and especially for keeping flowers in front of the statue of the Buddha. That is what I feel. आवाज नहीं आ रहा। पंडित जी शायद स्पिटून दिखा रहे थे, लिख वो गए लाने। अभी दिखाया था सर। अच्छा, क्या इट इज, मैं स्पॉटलाइट करती हूँ, एक मिनट। it's not that beautiful, I must confess. ये वो नहीं है, ये वैसा नहीं है। हाँ, वो तो ऐसा बिल्कुल फ्लावर वो तो ग्रास का होता है, इतना चमकता है वो। तो आई थिंक वी लर्न कि हमको धमरामा में वैसे स्पिट बनाने चाहिए। राइट, थैंक यू अंते जी। सोनल जी ने हैंड रेज किया था। हाँ जी बताइए प्लीज। वो है जी, फर्स्ट वाले जो एग्जाम्पल था, तो उसमें मैं रिलेट कर पा रही हूँ कि जो मंक्स थे वो ब्रास को देखा उन्होंने, तो वो जो चक्षु विज्ञान जागा, तो उसका कलर, उसका शेप, उससे उनको प्लेजेंट लगा, और मे बी नॉट अवेयर कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट, मे बी दे हैव नॉट ऐसा एनकाउंटर नहीं किए कि ऐसा कुछ अलग पर्पस के लिए इस तरह का पात्र को यूज किया जाता है फॉर स्पिटिंग एंड ऑल दैट। तो वो नहीं पता होने की वजह से उनका एक ओपन माइंडेड था कि ये कुछ अच्छा सा पात्र है, कोई अच्छी चीज है, तो मैं श्राइन में रखूं, कोई जो मेरे प्रिय हैं, भगवान है, एंड आई एम फॉलोइंग द टीचिंग्स, तो मैं कुछ अच्छा प्रेजेंट कर सकूं। तो विद दैट फीलिंग दे हैव यूज्ड इट, वो परसेप्शन काम किया वहां पे, and they've used it for as a flower pot for decoration kind of firstly. Second instant में क्योंकि जो monks थे उनको ये इन्होंने यूज किया है, ये इस तरह का जो दिखने वाला पात्र है, उन्होंने चक्षु विज्ञान से जाना कि ये तो इस तरह का पात्र है, और ये पात्र एक स्पिटिंग के लिए, इसके लिए यूज किया जाता है। तो फिर वो विज्ञान जागा कि ये अच्छा नहीं है, मतलब इसका यूज कुछ और था, और यहाँ पे भगवान के पास रखा जा रहा है, उसको थोड़ा कुछ लो स्पिटिंग का है, तो इट्स डिग्रेडेड या लोअर काइंड ऑफ है, उसका जो सुंदरता है उस पे नहीं ध्यान दिया, उसका यूज पे ध्यान दिया। भले ही वो दिखने में सुंदर है, कलर अच्छा है, बट उसका यूज किसी और चीज के लिए है। तो उनको ऑलरेडी उसके बारे में पता है, वो विज्ञान काम किया, इस वजह से अनप्लेजेंट लगा कि जो हमारे आराध्य हैं या
whom do we respect, उनके सामने ये कैसे रख दिए। तो दोनों ही उसमें जो पहले मॉन्क थे उनका आउट ऑफ नॉट नोइंग उन्होंने ये किया, बट दे वर फाइन। इसमें कोई अटैचमेंट इतना ज्यादा नहीं लगा कि उनके परसेप्शन से ज्यादा अटैचमेंट है, क्योंकि उसमें परसेप्शन इतना सॉरी परसेप्शन है, बट आई डिडंट फील अटैचमेंट है उसका। जो सेकंड केस में उस परसेप्शन से अटैचमेंट था, इसलिए अनकंफर्टेबल हुए कि इसको स्पिटिंग के लिए यूज करना चाहिए। तीसरे केस में जहाँ पे सीनियर मंक ने स्माइल किया, तो उनका जो परसेप्शन था उससे अटैचमेंट ना होना, लूजली होना, जो कॉन्सेप्ट है, जो धम्म है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, उस पे चिपकाव ना होना, ये दर्शाता है। और दूसरा ये भी थॉट कि हो सकता है अपने अपने परसेप्शन की वजह से ये यूज किए हैं। एनीवेज एवरी मतलब इट्स ऑल फॉर्म और मैटर का ही है, तो अगर सही हम बताएं तो इसको वापस निकाल सकते हैं या सही ढंग से यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली चिपकाव नहीं है, जो धारणा है उनकी, उससे चिपकाव नहीं होने की वजह से स्माइल हुआ, ऐसा मेरी परसेप्शन। Thank you. Thank you. Thank you. Can we do it more? I mean, whatever is said is fine, but can we do more identify technical words? कहाँ पे विज्ञान काम किया, कहाँ पे संज्ञा की, क्या संज्ञा थी, किस तरह से वेदना हुई, किस तरह से रिस्पॉन्स हुआ, that way so that we can understand these factors clearly. Of course, जो आपने कहा सब ठीक है, but to be able to do it this way, और कौन सा परसेप्शन, किस तरह का परसेप्शन यहाँ पे काम कर रहा है, which is probably very clear, but still just to clearly demarcate it is helpful. First case, perception that I'll put it in different ways. कैसे आवाज आ रही है कहीं से? Okay. You can mute everybody है. सर सब म्यूटेड ही हैं। अच्छा, तो एक मैं जानना चाहूंगा कि जो भिक्षु वहाँ पे, यंग भिक्षु जिसने उस सुंदर चीज को देख के वहाँ पे रख दिया, और उसका क्या परसेप्शन था और क्यों हुआ, और जो थाई भिक्षु आए उनको ऐसा क्यों लगा, और जो सीनियर जिनको मालूम है कि क्या हो रहा है, वही he kept quiet but he could understand क्या हो रहा है. So the young bhikkhu who had not been to Thailand, उनको समझ नहीं आया क्या प्रॉब्लम है, वो क्या रहा है. So what was that reason? How was this reason, and what is the reason for the third person? So there are three different categories of people. Same thing is being seen and producing different response. So why is that different response, and which sangya exactly is operating, which is the what is the vijnan, what is the sanya, what is the vedana, and what is the reaction, ताकि बिल्कुल clear हो जाए. So you can say first with respect to the monks of the Amravati who decided to put it there. I can try. Yeah, please go ahead. अमरावती monks के लिए somebody who brought it from Thailand, चक्षु विज्ञान जागा जब उन्होंने एक इसको स्पिटून को देखा, प्लेजेंट वेदना जागी, इसलिए उन्हें अच्छा लगा तो प्लेजेंट वेदना जागी, और संज्ञा ये हुई कि दैट्स अ नाइस ऑब्जेक्ट, लुक्स लाइक अ फ्लावर पॉट, पोटेंशियली, आई एम जस्ट हाइपोथेटिकली. तो जब उन्हें किसी भी वजह से उसे अमरावती लाने का मौका मिला, तो उनका ये परसेप्शन था कि इट कैन बी यूज्ड एज अ फ्लावर पॉट, एंड देयरफॉर that perception led to the action that a worthy thing to offer in the on the shrine. ऐसा करके उन्होंने वहां लगा दिया. जो वहां के अमरावती के मंक्स थे, उनको दे डिड नॉट हैव अ लेट्स से कंपैरिजन कि स्पिटून है वर्सेस क्या है, एंड स्पिटून इज नॉट कॉमन इन देयर कल्चर. तो उनका परसेप्शन दिस इज अ फ्लावर पॉट, एंड इट वाज एक्सेप्टेड विद इन द कम्युनिटी. So therefore nobody had any problem.
उसके बाद फिर जब थाई मंक आए तो उनका भी चक्षु विज्ञान जागा जब उन्होंने फ्लावर पॉट को स्पिटून को देखा, बट अनप्लेजेंट वेदना जागी बिकॉज ऑफ अ perception that this object is a spittoon to be used as a spittoon and shrine पे ऐसी चीजें नहीं रखी जाती। इस परसेप्शन के वजह से उनका रिएक्शन था कि उनका मतलब he became whatever उनकी जो cheerfulness थी वो गायब हो गई, and that's what he expressed when asked that this is not an object to be kept, so it is about a right and a wrong thing. And then जो third monk है, मुझे ऐसे लगता है कि he was not driven by चक्षु विज्ञान, यहाँ पे धम्म संज्ञा है कि and I may be wrong, actually no, I'm rethinking कि maybe it is श्रोत विज्ञान जागा, जब उनसे ये बात कही गई कि ऐसा ऐसा हुआ है तो श्रोत विज्ञान उनका जागा, उसको उन्होंने क्योंकि काफी प्रैक्टिस किया हुआ है तो इट लेड टू न्यूट्रल वेदना, वो समता भाव में रहे होंगे ऐसा मैं अज्यूम कर रही हूँ। एंड द परसेप्शन वुड बी कि जो भी कोई बात कही जा रही है वो अनित्य भी है, अनात्म भी है, एवरीबडी हैज देयर ओन परसेप्शन, and therefore he was in a state of equanimity and he could just smile at that. Good. Anybody else would like to say something? Yeah, I think that should be okay. The two cases, in one case for the young bhikkhus, the perception was formed. On the basis of Vedana, the perception was formed. Yam vedeti tan sanjeti. इतना सुंदर है, शक्ल ऐसी है, इसमें आराम से छेद है, इसमें फ्लावर रख सकते हैं. So they formed a perception कि इसको ऐसे use करते हैं. And all other people find nothing wrong in it. Yeah, it's very beautiful. अच्छे flower रख दिए उसमें तो क्या दिक्कत है? But a person whose perception is already formed about that object, now he is coming from memory. These people are looking at for the first time. This is another person is coming from his memory. Same thing we used to spit into. और उन्होंने भगवान के पास रख दिया. Now that's clinging to that perception is so strong that the fact that it's just an object, that fact got overwhelmed. The name became important. The designation became important. And you don't look at the object as it is. And therefore, there's a clinging to attachment, and that produces unpleasantness because Vedana jo hai unpleasant. And then, of course, being a very experienced monk, we didn't say anything, he just stood. But it obviously reflected on his face because he was feeling there was a reaction कि ऐसा नहीं होना चाहिए. And then when the senior monk asked and this understood, you could see clearly there's just a difference of perception. Perception is impermanent, and that's how this is happening. And then whatever action they took or not took, I don't know. So we can see how perceptions in one case are formed already. In second case, they are formed by looking at it afresh. And in third case, both the perceptions are seen and there's an understanding, oh, this is actually clinging to perception, that's all. And produces no reaction. It produces an understanding of both the young monks and this young monk from Thailand, and therefore everything is seen in a clear way. That's how I understand it, okay? I hope it makes sense. So you can see clearly the Rupa Sanya and how it is created and how past memory can create it. Clinging to that past memory creates a fixed view, and then you produce a different response. Okay? Sir, ये जो senior monk हैं, उनका क्या? You could see that this comment is arising from difference in perception. Rest of the monks have a perception that it is an object. They have not given it a name, spittoon. They see it as a beautiful object, and on that basis, they decide its use. This monk
has been using it in a particular way, and therefore there's a clinging to that perception. It should be used only in that way. So he said, basically, he said these different responses are clinging to perception. And since this understanding was there was no aversion either to this or to that. So yeah, that's okay. And he knew, after all, perception is impermanent. It's what happens. This is what happens due to clinging to perception. And this is what is the clear indication perceptions are impermanent and they are formed on different bases. और उनकी जो संज्ञा है वो कौन सी वाली है? Like, is it Shrodh संज्ञा or that is what is that Dhamma संज्ञा? See, he has a clear understanding of Dhamma, that perception is impermanent, and therefore the words which are heard are interpreted in that in the accordance with that sanya, that understanding, which is a Dhamma sanya. That is his understanding that this is one mental factor, this is another mental factor. It's impermanent, it changes. So when you hear those words, they are interpreted according to Dhamma sanya, that perception is impermanent. And so you see how it is just a result of that truth that I am seeing these, hearing two different words. So the two different interpretations don't create a conflict, because you can understand these interpretations are coming from different perceptions and they are based on past conditioning. In one case, past conditioning, in case present conditioning, whichever way they look at it. And therefore, there is no conflict, there is no feeling कि ये गलत है, ये ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, because the person understands. It is just a question of perception, which is impermanent, and attachment to perception, which is causing suffering, and inability to see that perceptions are conditionings, which are not me, not mine. So if a person has that clarity, then fine, that's okay. You recognize differences in opinion, and you don't get offended or upset, and it produces no reaction. Okay. Yes, Nikhil, you wanted to say something? जी सर, मुझे थोड़ी अपनी समझ क्लियर करनी है. कल आपने डिस्कस किया था, फिर शाम को मैंने इंडिविजुअली समहाउ शिवेंद्र से भी डिस्कस किया था कि आपने जैसे एक भिक्षु ने उस पात्र को देखा जिसमें हम वेस्ट स्टफ डाल रहे हैं, तो उसका एक कॉन्सेप्ट बना, रूप संज्ञा बनी. फिर जब उसके दिमाग में ये मेमोरी उठी कि इसमें तो हम वेस्ट स्टफ डालते थे, तो क्या हम उसको रूप संज्ञा के बाद ये जो मेमोरी वाला पार्ट है, सेकंड पार्ट, क्या उसको हम धम्म संज्ञा से जोड़ेंगे या पूरा प्रोसेस रूप संज्ञा ही कहलाएगा? मैं yesterday I was bit सर आप कल भी मैंने कहा था, पहले भी कहा था, उनकी रूप संज्ञा ने ये नहीं कहा कि ये सुंदर ऑब्जेक्ट है, उन्होंने कहा ये स्पिटून है. That's it. We're not focusing on in Roop Sanya entirely. When we say Roop Sanya, we're not just focusing on color and shape. When I see somebody, I don't say he's fat and unbeautiful. I say he's my father. That's what I'm saying. So you may say father is a concept, it is Dhamma. No, please don't look at it like that. You'll get totally confused. This is the way we are trying to define things, segregate them clearly. नहीं तो कहीं भी नहीं पहुंचे, तो हम totally lost हो जाएंगे. You don't understand that. Okay? Because when I look at a person, I recognize him on the basis of his rupa in a particular manner. I recognize, I don't say it is a coloring of green color and a form of this kind. I say it's a tree. I give it a name. Okay, so we are looking at it at that way of identification. क्योंकि अगर हम कहेंगे या तो of course that will be a panya actually. This is just a collection of, this is just what is being seen is just the collection of colors and a particular shape. That will be yoniso manasikara. And even deeper yoniso manasikara will be, it is just 4 Mahabhutas
interacting in a particular manner. Or scientists would say, oh, there's no color green and all that. It's just photons hitting into my eyes of certain frequency, and they are producing that impression. So that's a much different way of looking at it. That is not based on appearances. That is based on Yoniso Manasikara. Okay. So that will be more like Panya. Okay. So we take simple thing. We don't want to complicate it too much. So when I say Rupa Sanya, which means how do we designate that thing? That's also a definition of Radha. We give a name, we give a designation, we identify its purpose. So as it is, and you identify its quality, you identify its meaning. All that we put as a part of Sanya. Okay. When you hear words, you can say this is just sound coming in, sound vibrations coming in, going. That's perfectly fine. That is a perception based on Yoniso Manasikara, which will be called Anicca Sanya or Anatta Sanya, whatever else you formulate your opinion on. But what do we do? On praise, criticism, we name those words in that, isn't it? So that is the naming, praising and criticism, that produces reactions. If you have Panya, that will allow us to maintain equanimity. And we don't get reactions. So that is we're not talking of the normal appearance-based perception as Sanya. Okay. Okay, sir. Sir, one more thing, like √-1. ये तो बिल्कुल ही abstract है और इसको हम धम्म संज्ञा में रखेंगे. This is not something which is seen, tasted, heard. ऐसे clarify कर सकते हैं? क्या ये एक रूप है? क्या ये एक साउंड है? क्या ये एक टेस्ट है? क्या ये एक स्मेल है? क्या ये एक स्पर्श है? No. Put it there. It is a concept. Oh. It is a concept. Mathematical concept, which has no reality of its own. It's imaginary. वो कहते भी imaginary है. So it's an imaginary concept. So we don't mix it up with other things. You can say it is written on a piece of paper, so I'm seeing it. Yeah, of course you're seeing it. But what do you make out of it? You can say that would be a way of interpreting it based on appearance. It is a series of dots which are put in a particular manner. Then you don't interpret it as this as under root. You don't know what is it. If you show that writing this way, -1 to a class 3 student, he understands this is 1, but he doesn't understand ये क्या टेढ़ा मेढ़ा लगा रखा या right क्या लगा दिया इसके ऊपर. He doesn't understand that. He will not be able to interpret it. है ना? उसको समझ नहीं आएगा ये क्या है. अच्छा ये 1 लगा दिया, ये माइनस लगा दिया और ये right क्या लगा दिया इसके साथ. We can't, because we have given symbol. That symbol has a meaning. No? So that meaning is given by us. Symbol doesn't have intrinsic meaning. A person whom I call as my father, I have given that meaning. He is my father, not my mother's father. My mother will look at him as a husband. So there's a different meaning for her, different perceptions. So we should see the temporariness of a perception and how different people can interpret different things differently. Okay. And one more thing, sir, कि आपने शायद यही बोला था कल कि बहुत आसान नहीं होगा कि हम segregate कर पाए इधर, right? But once we make this concept simple in these terms, कि जो किस इंद्रिय के द्वार से क्या हम डेजिग्नेट कर रहे हैं, then it becomes clear. कि हम किस इंद्रिय के द्वार पे डेजिग्नेशन कर रहे हैं, then we can make it clear. Because a designation is there, naming is there. That naming is the result of perception. Because that's how we identify it. It becomes a part of memory. And that memory then keeps on operating. A person is shown a pot, and it has been named in Thailand as Spittoon.
and they use it in that manner. That name conveys meaning and conveys the use of that. So they use it in that manner. And then the appropriate response emerges. May I ask one more question? Like जैसे हमने टीवी में देखा डेमोक्रेसी की, हमने न्यूज को देखा आंखों से और कानों से सुना कि वहां पर लोग खुश दिख रहे हैं और न्यूज वाला भी हमें खुश बता रहा है। फिर हमने एक कम्युनिस्ट कंट्री को लेट्स से देखा इमेजिनरी, वहां पर लोग दुखी दिख रहे हैं और कानों से हमें वो दुख वाली चीजें बता भी रहे हैं। तो हम इन दोनों का उपयोग करने के बाद फिर एक जनरलाइजेशन दिमाग में बना रहे हैं कि डेमोक्रेसी इज बेटर देन दिस। तो उसको हम क्या hold on. क्या आप 2 न्यूज देख के ओपिनियन बना लेंगे? लेट्स से मैंने 3-4 देखा फिर बनाया। अगर 3-4 कंट्रीज को कंपेयर किया, ये 3-4 कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये 3-4 कंट्री Will it be the news seen once? नहीं, over the time, sir. So it's a cost of opinion formed on the basis of years of person. It cannot be just on one day कि एक दिन यहाँ ये हो गया तो बस डेमोक्रेसी खराब हो गई, ये यहाँ अच्छा हो गया तो कम्युनिज्म अच्छा हो गया, या कम्युनिज्म खराब हो गया डेमोक्रेसी अच्छी हो गई. That's not how we form perceptions, isn't it? And the ability to form perceptions of that kind is based on wide number of, for any person would be based on a wide series of experiences. तो वो उन वाइड एक्सपीरियंसेस को आप किस डोमेन में डालेंगे? क्या ये लोगों की शक्ल देख के बन रहा है ओपिनियन, या सिर्फ शब्द सुन के बन रहा है, या उनके क्रियाकलापों के आधार पे बन रहा है, या उसके रिजल्ट के आधार पे बन रहा है? उनकी स्मेल टेस्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है ना? तो अब आप उसको किस कैटेगरी में डालना चाहेंगे? This is for you to decide. Now see where do you want to fit it. I don't have any fixed opinion on it. See where you can fit it and make a use of it. Because we are not doing analysis just for the sake of analysis. We are doing it so that we see इससे हमारा व्यवहार कैसे फर्क पड़ रहा है, किसके प्रति क्लिंगिंग हो रही है, और उस क्लिंगिंग से दुख कैसे हो रहा है. ये है ना हमारा उद्देश्य. Our main purpose is this. Everything else is secondary. Classification, categorization is secondary. All that is for this purpose कि भाई हम इसको किस दिशा, किस तरह से देख रहे हैं. और जो भगवान की टीचिंग है कि जैसे मैंने अभी हमने जैसे एक नई चीज के बारे में कहा है कि उन्होंने एक ऑब्जेक्ट देखा, जिन्होंने पहली बार देखा, and they had a Vedana on seeing that object. It's exactly according to Madhupindika Sutta. क्या आपने देखा, चक्षु ने उसको देखा, उस पे प्रिय वेदना हुई. Vedana is based on the beauty of it. You have a conception of beauty, and then on the basis of priya vedana you thought, oh, thinking arose. Yam vedeti tam sanjati. कहाँ इस्तेमाल किया? It's so beautiful. I think it should be used as a flower to make present it to the Lord, because that is the most beautiful place in our monastery. So we should put it there. Now that is how the thought formed. और उसको फिर प्रपंच चला होगा, हाँ ये बहुत अच्छा रहेगा, ये है वो है, and then the decision was taken. Okay, we put it there. So there, it is the first time seeing that is resulting in that perception being formed. While in the other case, the same thing has already been given a name. Here, it has not been given a name. Here, it is a beautiful object. There, a name has been given, and the use has been decided already, and it is being used in that manner. So there is an fixed opinion. हाँ ये तो यही है, ये किसी और काम नहीं आ सकता. So we form. That's how we form opinions. We form opinions about things. And you can see the opinion based on so many issues. It will be based on convention. It will be based on कि मैं किस तरह से कंडीशन हुआ हूँ, मैं वहाँ इस प्रदेश में कंडीशन हुआ कि जहाँ पे उसको इस तरह से यूज करते हैं, तो मेरा फिक्स्ड ओपिनियन हो गया, ये तो यही है. I don't want to get into any other opinion. And somebody may say that it's a very decent way of it actually looks like a hammer, and I can use it to beat people and hurt people. That would be another perception of looking at the same thing.
If it is very heavy, we say, हाँ, it's a good thing. मैं इसको उठाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, grip कर सकता हूँ, and I can use it as a hammer. So is that wrong? Is there anything wrong about it? You can do it actually. So it's the way we interpret experiences. That is called a perception. Now I repeat, we're talking about the appearances and how meaning is imparted to them. And how we then relate. On the basis of the meaning, we relate to that thing in that particular manner. So that is the importance of perception. That meaning then gives us appropriate feeling arises on the basis of it. Okay? तो सर मधुपिंडक सूत्र उस सिचुएशन के लिए है जब हम उस चीज को जानते नहीं है। यंग वेद्यति तंसा, अगर हमें पहले से हमारी संज्ञा बनी हुई है तो रिवर्स भी हो सकता है। बिल्कुल, that's what I have been pointing out. Vedana and Sanya have a Anya Manya Pachayo. They have, in fact, all of them have that. It's not just Vedana Sanya. वो हमने तिकपठान में पहले पढ़ा था, चत्तारो अरूपिनो खंदा अन्य मन्य पच्चे, वो एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं. That is the reason it's difficult to put it out, क्योंकि they get affected by each other. Right. स्फटिक संखार जो है बना हुआ, उसके कारण आपने किसी को देखा और आपने उसको देश जाग गया, उसको देख के तो सारी चीजें बदल जाएंगी. And if it is happening quickly on the basis of past conditioning, then your response will be totally different. So we are trying to understand this. Again, understanding from what purpose? To see its origin, to see its cessation, to see its gratification, to see the danger, and see the escape. What is the gratification? ये मेरी संज्ञा कहती है ये है, and I am happy with it because I am using it in that manner. किसी ने change कर दिया उसको, किसी का perception different है, different perception से मुझे खतरा होने लगता है. ये क्या हो गया? Because I am attached to my perception, a change of perception causes unpleasantness. So that's what is a danger in that. And then one says, oh, understand, it's just a perception formed on the basis of conditioning. And I should give up my attachment to perception. So the moment I give up attachment to perception, I escape from its grip. Uske grip se bahar aa jata. Then difference of perceptions no longer becomes a cause of conflict. Then it becomes a cause of understanding. And I move in the direction of understanding, become more and more wise, have a right view. At least in this dimension, I develop a right view. That, yeah, perceptions are impermanent and therefore they're different, they're uncertain. So then I don't attach to them and I release so much of suffering. If I can drop my attachment to perception, so much of suffering is reduced. And that is the main purpose we are discussing. That's our main purpose, nothing else. We're not trying to strictly find out whether it is this or that. We are seeing it from the, and this is right and that is wrong. No, this thought itself will be denial of the impermanence of perception. If I say, no, this perception is right and that is wrong, then I'm actually contradicting myself. Because the perceptions are based on conditioning. Different people have different conditioning. So what am I talking of right perception? The only right perceptions are, perception is impermanent. That is not undeniable. Perceptions, attachment to perception causes suffering, undeniable. So we can say, that's why we call it Sanya, because it is right perception in the sense that it is universally valid. It also is a perception only. Perception of him, that is called Anicca Sanya, Anicca, Dukkha Sanya, Dukkhe, Anatta. इस तरह से हमने पढ़ा था ना last year. And we keep on repeating it again and again. तो वो इसलिए कहा गया उसको इसलिए पन्या कहा गया क्योंकि fundamentally right way of looking at things. This is based on Yoniso Mansikara, penetrating into the nature of reality. Okay? Good. Thank you. शर्मा जी भी कुछ कहना चाहते हैं? Sure. Are you hearing me? जी. Sir, I am taking, let me my example.
we I would request you not to take another example because we want to focus on this example. हम इसको देख के समझना चाहते हैं, क्योंकि कोई और एग्जाम्पल लेंगे तो सारा डिस्कशन फिर नया ओपन हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी. हम एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल को ही समझें, ये मेरा निवेदन है. अच्छा, नहीं तो डिस्कशन बहुत इधर उधर हो जाएगा. so this is general type, not my personal, I should say. Should I say something, sir? No, tell me. बोलिए. Yeah. We have a certain perception about a saint. वो छोड़ दीजिए please. Okay. That's a different category. A second example is of that kind actually. I was going to put, but अभी समय नहीं है. Okay. Okay. अंदर से बात करूँगा. Should we do it in evening or not? Otherwise. Thank you, sir. Thank I have you. at least 2 more examples. मैंने 3 example रुकी थी. But Yeah. it's good कि हम discussion कर रहे हैं ताकि ठीक से समझ लें. हमें जल्दी कौन सी है? Yeah. मैं बात कर लूँगा दिन को बनते ही से सीखे. हाँ. We can Yes. discuss Yes. slowly क्योंकि हम जब उसको इस विभिन्न पर्सपेक्टिव से देखते हैं, हम लोग भी तो अलग अलग है ना, हम लोगों का भी तो पर्सपेक्शन अलग अलग है ना, तो उसको समझना भी तो एक महत्वपूर्ण बात है कि हम समझें कि अलग अलग परसेप्शन से हम एक इवेंट को समझ रहे हैं जो एक्चुअली हुआ है. तो इसलिए मैं निवेदन करूँगा कि उसी पे फोकस करके उसको समझने का प्रयास करें. आपका अगर कोई और उदाहरण हो तो आप मुझे भेज दीजिए वो लिख के, फिर मैं उसको समझ के I can present that as yet another example. That will be helpful to me because in finding out this example, काफी देर मुझे लगी कि ऐसी एग्जाम्पल लीजिए जो क्लियर हो जाए, कहीं कंफ्यूजन ना हो. मल्टीपल उसके मल्टीपल इनपुट्स होंगे तो उसके आधार पर समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. That's why I took simple example of a रूप संज्ञा and attachment to रूप संज्ञा, कैसे उससे different response मिलता है. I hope this example made उससे आपको clarity हुई, confusion नहीं बढ़ा. So I have a question. जी बोलिए. The senior monk who just smiled and जैसे दीप्ति मैम ने कहा था कि मतलब वो समता में थे, मतलब could have been in samta. So does that necessarily means that जब उन्होंने सुना and श्रोता विज्ञान हुआ, उसके बाद he necessarily have the neutral feeling? It's not necessary, right? He may have an unpleasant feeling and still he. How can I say third person what was his perception? मैं तो अपना perception बता रहा हूँ आपको. Obviously, how can I penetrate into anybody's mind? We can't say this is necessarily that. Impossible. If I say it, I'm contradicting myself. Yeah. To say somebody is necessarily thinking like that would be very bad incorrect on my part. How can I say that? मैं तो अपने perception से उसको बता रहा हूँ कि वो उनको ऐसा लगा होगा, क्योंकि मैंने जैसे उसको सुना, मैंने ये समझा कि हाँ इनको मैंने एक से सुना कि बहुत गलत है, दूसरे में इसमें गलती क्या है. मैंने दोनों बातें सुनी और मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, बिकॉज आई कुड अंडरस्टैंड कि ये शब्द कहाँ से आ रहे हैं और ये शब्द कहाँ से आ रहे हैं. एंड बिकॉज मुझे मालूम है कि परसेप्शन इम्परमानेंट है और वो कंडीशनिंग से बनता है, और मुझे मालूम है इनकी कंडीशनिंग थाईलैंड में बनी है, इनकी कंडीशनिंग इंग्लैंड में बनी है. बात खत्म हो गई. Doesn't create any confusion, any doubt, and any further questioning. I just understand it, and therefore the mind does not get upset. So the understanding of now it is not just sanya, it is understanding that sanya is impermanent, sanya is conditioned. Then we have that. This is a panya, dimension of panya. You are understanding sanya anicca, sanya anatta, sanya dukkha, and then you are able to maintain equanimity. That's the way I interpret it, you can say. Why did the senior not react and smile? He may have his own reasons. I'm being interpreting, putting my understanding in him. So you can say that. There can be so many reasons of not responding or smiling, and it could be of anything. So many things. Sir, I was actually not talking in the context of perception. I was talking in the context of
वेदना की थोड़ा जोर से। I was talking in the context of Vedna जी, कि if वेदना किस पे निर्भर करेंगे? विज्ञान और संज्ञा पे भी संज्ञा पे निर्भर करेंगे। जो दो बातें आपने सुनी उसको आपने कैसे इंटरप्रेट किया, इस पे निर्भर करेगी ना। आपने दो बातें सुनी, दो स्टेटमेंट सुनी, तो आप उनको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, उसके आधार पे वेदना जागेगी। आपने उन दो बातों को प्रज्ञा के आधार पे देखा, कोई उसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कोई गलत नहीं है, कोई ठीक नहीं है। So you understand why it is coming, and then of course one can explain, and whether he explained or not, I don't know, but I'm just saying, if I was there, I would have explained. That's it. Okay, yeah. Does it make sense? Yes, sir. Yes, sir. It makes sense. Thank you, sir. ठीक है। I'm sorry, मेरी आदत हो गई है कुछ। महापन्ने जी ने फिर याद दिलाया कि लंबे सेंटेंस को हिंदी में बोला करो। मैं क्षमा चाहता हूँ। I'll try to be more careful. दीपक जी ने चैट पे लिखा है कि we must take a few more examples and have threadbare discussion. जी, so we can take in the evening, आज शाम को। So मंत्री जी से प्रार्थना। दरअसल जस्ट ब्रीफली एक्चुअली ये जो वेदना वाला है ना, क्योंकि मुझे भी ये कई बार आता है, आई ऑल्सो रिसीव दिस फ्रॉम मेनी पीपल मेनी टाइम्स। मेरे ख्याल से एक ऐसी धारणा है कि रिमेनिंग इन इक्वानिमिटी, या जो भी आपका ये उदाहरण है ऑफ द सो कॉल्ड सीनियर मंक, ऐसी एक समझ है या ऐसी एक धारणा है हम में से कईयों में कि उसका अर्थ है कि उसकी फीलिंग्स न्यूट्रल है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसको क्लैरिफाई करें कि क्या केवल न्यूट्रल फीलिंग होती है तब इक्वानिमिटी में रहा जाता है, या फॉर एग्जांपल देयर कैन बी प्लेजेंट फीलिंग, अनप्लेजेंट फीलिंग, और वहां से फीलिंग से उठ के वो पन्या की तरफ जाता है वरना एंड नॉट तन्हा की तरफ। सो मे बी आई विल इनवाइट यू टू क्लैरिफाई दिस, है ना, ये इशू है इसमें। जो फीलिंग है वो परसेप्शन से गाइड होती है, और फीलिंग के प्रति रिस्पांस प्रज्ञा से गाइड होता है। प्रज्ञा नहीं है तो परसेप्शन से गाइड होता है। तो जो दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा था वो इतना क्रॉस एग्जांपल है कि somebody is being tortured and he's sitting equanimously. What is that? There is a perception about the torture. It is the doing of the God, and I am a devotee. Period. This is the gift from God. I'm not saying it is right or wrong, so please don't get into that. That is the perception, and that's a living example. I mean, sorry, the person has passed away a long way. That's an example from history of India, of a great guru. So you have to see that. कैसे हो रहा है वो? तो उसकी जो implications हैं, they are from the हमारे we have to see कि equanimity is not based on the kind of feeling you have. It is based on your panya. It's based on your perception. That's a different thing. पन्या के वेदना पे जो रिस्पॉन्स होगा वो डिटरमिन करेगा ना इक्वानिमिटी को। तो हम जो बार बार पढ़ते हैं ना, वेदना पच्चया तन्हा, why, and then we say vedana pachya sanya. So if there is sanya, there is no reaction. Sorry, panya. If there is no, if there is understanding of vedana, there is no reaction. As I gave the example. Okay. So we can reflect on it. It's a दूसरा उदाहरण ऐसे ही था एक्चुअली, extreme unpleasant vedana and still equanimity. Now
How do you make out of it? So we'll discuss it. क्योंकि आज हम सब एक ही चीज को डिस्कस कर रहे थे, तो ऐसा करेंगे, विल रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू समराइज वेरी ब्रीफली हर एक ग्रुप से, एंड अगर एक ग्रुप कुछ कहता है दूसरा ग्रुप डिफरेंट कहता है, तो देन वी कैन सी हाउ डिस्कशन इवॉल्व्स बिटवीन देम, एंड एट द एंड इफ सम थिंग्स रिमेन आई विल ट्राई टू present my perspective. First of all, we have to understand that there is nothing like right perception, or because we are just हम केवल विजुलाइज कर रहे हैं कैसा सीन था, किस हद तक हम उसको विजुलाइज कर सकते हैं, किस हद तक हम उन डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ अपने आप को उनसे एम्पैथाइज करके देख सकते हैं, पुट इट इन दैट पोजीशन. इट डिपेंड्स ऑन ऑल दैट. सारा सीन इज वेरी कॉम्प्लेक्स. देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ इनपुट्स कमिंग, बट हम कोशिश करेंगे कि जो प्रोमिनेंट इनपुट्स हैं, प्रोमिनेंट सेंस इनपुट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करें, और फिर उसके आधार पे किस तरह का परसेप्शन, किस तरह का वेदना हुई, और जिससे वो रेस्पॉन्स में, जो मैंने जैसे बताया गुरुजी का क्या रेस्पॉन्स था, उनके कुछ डिसाइबल्स का एक था, कुछ का दूसरा था, और जो सिपाही थे जो उनका अलग से रिस्पॉन्स था. सो वील ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ऑल दिस वी आर डूइंग टू अंडरस्टैंड जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, विज्ञान, वेदना, संज्ञा, और खासतौर पर संज्ञा का क्या इम्पैक्ट होता है हमारे जीवन पे, उसको समझने का प्रयास करते हैं. तो इस परिप्रेक्ष्य में संक्षेप में मैं चाहूँगा ग्रुप नंबर 1 से शुरू करते हैं. ओके, हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ जी. यस सर. ओके सर, फर्स्ट आई वांट टू अपोलोजाइज कि मैंने आज भी रिकॉर्ड नहीं किया, सो सॉरी. दूसरा, हम जो ग्रुप से डिस्कशन हुआ जी, उसमें ऑफ कोर्स काफी जगह पे सब जगह पे एग्रीमेंट नहीं हो पाया, वो ऑफ कोर्स टाइम का भी कंस्ट्रेंट था, बट एक तो वेदना जो हो रही थी एटलीस्ट विथ रिस्पेक्ट टू गुरुजी की वो दुखद थी, बट इन अ सेंस कि वो दुखद होने के बावजूद भी वो इक्वानमस माइंड पे थी और दुखद काया पे थी. दैट्स प्रोमिनेंट. वो एक हुआ. दूसरा, गुरुजी की संज्ञा के बारे में ये एग्रीमेंट हुआ कि उनका धम्म संज्ञा थी. इट वाज भक्ति भाव था और वो धम्म संज्ञा थी. दैट वाज इन एग्रीमेंट. देन जो डिसाइपल्स थे उनके, उसके बारे में उनका भी जो वेदना रहा है, विज्ञान रहा है, चक्षु विज्ञान मोस्टली. हाँ, ऑलमोस्ट सबने हम सब ऑलमोस्ट एक ही एग्रीमेंट पे आएगी, वो चक्षु विज्ञान था और उनको दुखद वेदना हो रही होगी. और संज्ञा के बारे में यहाँ डिफरेंट संज्ञा आई. यहाँ पे ऑफ कोर्स एग्रीमेंट नहीं था पूरा, पर रूप संज्ञा और शब्द संज्ञा, जैसे सूर्य सर ने कहा कि उन्होंने देखा अपने गुरु को टॉर्चर होते हुए और उनमें रूप संज्ञा जागी. तो बट वी नॉट, हम इस पे नहीं आएंगे कि एग्जैक्ट संज्ञा क्या थी, सो उस पे नहीं आ सके.
उसके बाद में जो सिपाही थे उनका भी चक्षु विज्ञान बेसिकली मोस्ट प्रोमिनेंट। उसके बारे में वेदना, सुखद वेदना की उनको कुछ रिवॉर्ड मिलने वाला है, सो एक सुखद वेदना। और संज्ञा के बारे में हम यहाँ पे ज्यादा उनकी संज्ञा के बारे में ज्यादा डिस्कशन हो नहीं पाया सर, सो या थैंक यू। हाँ, ग्रुप नंबर 2। जी सर। सर अगर विज्ञान की बात करें तो अगर आप उससे एग्री करते हैं, सो यू कैन जस्ट से एग्रीड एंड देन टेल। नहीं सर, एक्चुअली मुझे 2 मिनट में रिकलेक्शन अपने में लग गया था करने में, 2 मिनट। ठीक। तो उन्होंने जो हमारे ग्रुप में कंक्लूजन था वो ये था कि जो आंखों पर और कानों पर विज्ञान है वो टॉर्चर जो कर रहे हैं उनके अंदर भी जाग रहा है, गुरुजी के अंदर भी जाग रहा है और उनके शिष्यों के अंदर भी जाग रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट गुरु अर्जुन देव के ऊपर काया विज्ञान भी जाग रहा है। तो ये अंडरस्टैंडिंग थी। वेदना की बात करेंगे तो जो टॉर्चर कर रहे हैं उनके अंदर सुखद वेदना जाग रही है, और गुरु अर्जुन देव के ऊपर दुखद वेदना है और उनके शिष्यों के ऊपर भी दुखद वेदना है। फिर जब संज्ञा की बात करेंगे तो जो टॉर्चर कर रहे हैं उनकी अंदर जो समझ है कि वो अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके राजा के खिलाफ बोल रहे थे। गुरु अर्जुन देव की जो संज्ञा है उसके अंदर हमारा डिस्कशन है कि अत्ता भाव नहीं है और बहुत कंपैशन है, तो इसलिए वो शांत। धम्म संज्ञा। और जो उनके शिष्य है उसमें जो 2 कैटेगरी है, जो रो रहे हैं या दुखी है, थोड़े से एंग्री है, उनके अंदर इस तरह की धम्म संज्ञा जाग रही है कि ये हमारा लॉस हो रहा है और हम भी हो सकता है कल को पीड़ित हो जाए। और जो वो शिष्य है जो शांत बैठे हुए हैं उनके अंदर भी धम्म संज्ञा जागा हुआ है, लेकिन उनके अंदर इस तरह का धम्म संज्ञा है कि उन्होंने दे हैव सरेंडर टू द गुरु एंड द डिवाइन विल, तो इसलिए वो शांत चित्त होकर बैठे। जो आप कह रहे हैं, जिसको आप धम्म संज्ञा कह रहे हैं, उसका आलंबन क्या है? चक्षु, आंखों से देखना। जो चक्षु से रूप देखा जाता है तो धम्म संज्ञा कैसे होगी? नहीं सर, एक्चुअली चक्षु वो तो डायरेक्ट वो है, लेकिन साथ में जो पैरेलल उनके दिमाग में जब बैठ गया, जो चक्षु से तो उनको दुखद ही दिख रहा है, लेकिन जो दिमाग में कॉन्सेप्ट आ चुका है जो उनके गुरु ने सिखाया, तो वो उनको पीसफुल रखता है उस समय, उस सिचुएशन। और जो पीसफुल नहीं है, जो पीसफुल नहीं है उनका अंदर का वो जो जिसको भगवान बुद्ध बोलते हैं ना, प्रेम ऐसा है कि अटैचमेंट में बदला हुआ है और वो रोक नहीं पाते, तो वो उनकी आंखों से आंसू निकलते। उनको पता है कॉन्सेप्ट, लेकिन अंदर का भी वो सो कॉल्ड प्रेम या अटैचमेंट अभी पका हुआ नहीं। एंड द थर्ड ग्रुप? Sir, due to time constraint, we were not able to exactly come to a conclusion. लेकिन I'll just try and present what we agreed on certain things. जैसे गुरुजी का है विज्ञान, उनका तो रूप, चक्षु और श्रोत विज्ञान और काय विज्ञान भी था, because he was tortured on the body. Again, when it comes to Vedana, though there was a physical, bodily was a painful Vedana, but at mental level he was very much at peace because he had a lot of compassion. Now perception, one could not arrive at perception, but according to me I felt that he has gone beyond perception, because जैसे मुझे समझ में आया that he vanished after the torture, तो मुझे वो समझ में नहीं आ रहा, we are still discussing, so मुझे I cannot answer that question. We were just discussing and we could not come to a conclusion on that. So that is one. Second, with disciples, वहाँ पे चक्षु विज्ञान भी था, श्रोत विज्ञान भी था, because they could hear that whatever the torture और ये, और शायद ऐसा भी हो सकता है that disciples were in large number, तो एक defined वेदना तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, किसी को शायद unpleasant feeling हुआ है but they were not clinging to that feeling, किसी को pleasant feeling तो नहीं बोल सकती हूँ, neutral feeling हुआ रहेगा. When it comes to perception, definitely the perception was like, our leader is punished and he is going through a lot of torture, so there was an attachment to the religion as such is what I feel. तो वहाँ पे एक रूप संज्ञा भी आ गया है, और so that we just discussed till वहाँ पर, because ये 2 अलग leaders के ऊपर था, तो there was an attachment and clinging as such when it comes to the disciples perception में. तीसरा जो है
about the governors, rulers, तो उनका तो obviously श्रोत विज्ञान भी था, चक्षु विज्ञान भी था, रूप विज्ञान भी था. श्रोत विज्ञान was pleasant because they are going to be rewarded. So there was a happiness feeling. What was the आलम्बन क्या था श्रोत विज्ञान से? आवाज जो उनको कहा गया कि you are going to be rewarded if you. तो आवाज वहां पे तो कोई नहीं कह रहा था ना उनको. वहां पे तो आवाज सुन रहे थे वो उनके रोने की या गुरुजी की चैंटिंग सुन रहे थे वो तो. That is the words they were listening. नहीं, जब reward was the ruler had, जहांगीर ने उनको कहा था ना कि that you will be given a reward. At that moment, did Jahangir tell them? Did they hear it? At that moment, we're talking of the moment, ना? तो श्रोत विज्ञान जागता है जब कान से कुछ सुना जाता है. श्रोत वेदना जागती है तब, है ना? तो वहां पे जो सुन रहे हैं उसमें ये बात कहाँ से आ गई? So I think I was Okay. talking that. Okay. You can think about it. If you can't answer, you can say, I'm not sure. That's fine. No problem. Go ahead. I mean, SPG, you can also add to it, yeah, because like we could not come to a conclusion as such. Perception as such, again, it's same perception. Like, you know, we are going to rule the Islam. So like, you know, our leader is going to be a conditioning tha, and there was an attachment to that kind of a ruling thing. So that is what we could come to a conclusion, because we didn't have much time to conclude. But I would request if SPG would like to add something, if I have missed out on something. No, I think basically there was a lot of discussion on this, but no clear agreement, because we all felt that they must have been thinking about a lot of things. For example, some people may be perceiving that this is an attack. I'm talking for the disciples. This is an attack on their religion, on their way of life. Whereas the governors people may have the perception that this is good for Islam. We are making taking actions which will put Islam at a higher stage or something like that. But this was a lot of guesswork and not really a very clear thought process. Good, thank you. Now, as I said, we are all doing a guesswork here, isn't it? Based on our way of understanding the situation, और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं किस हद तक हम उस परिप्रेक्ष्य से अपने को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस हद तक कितनी डिटेल में हम उसको देख सकते हैं. एक तरीका जब इतनी कॉम्प्लेक्स चीज होती है देन हम फोकस करते हैं प्रोमिनेंट इनपुट्स पर. कौन सी सेंसरी इनपुट प्रोमिनेंट है, क्योंकि देयर विल बी सो मेनी अदर सेंसरी इनपुट्स, isn't it? When a skin is falling on, there will be smell also, but we put it aside for the time being. नहीं तो हमारे लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा समझने के लिए. तो उस प्रोसेस में जो गुरुदेव जी हैं, अर्जुन देव जी, उनको क्या महसूस हो, उनके ऊपर काया विज्ञान, because he is feeling hot from the stove and hot from this, so there is a direct experience of heat. So Vedana hai udhar heat hai, it's very hot. But what is he doing? जैसे story में आता है that he sat calmly and quietly, no protest, no anger, no crying, no anguish, and on the other hand he also trying to console and telling them कि हम जब आपसे teaching हम इस पे कहते हैं कि भगवान पे विश्वास है हमारा. That is a perception that there is a God and whatever he does is right. That's what he's saying. वो कह रहे हैं तेरा किया मीठा लागे, तो जो भी आप भगवान करते हो मुझे पसंद है. Now that's it. It's very strong perception of a particular kind. और उस perception का असर ये है कि he's trying, वो अब उस perception के हिसाब से आपके सामने जी के दिखा रहे हैं कि इतनी unpleasant experience हो रहा है, but he's taking it as a prasad from the God. That is what in Sanskrit is called prasad buddhi. Having that understanding that whatever you get is a God's gift. So that's obviously a very strong perception and very strong belief in that is needed to be able to handle that.
एंड दैट उससे क्या होगा कि जो उनकी 5 जनरेशंस की जो उनके 5वें गुरु थे, सारी टीचिंग यही थी कि वी डिवोशन की टीचिंग है प्राइमरीली, and devotion to God who is omnipresent, who is present everywhere. So that उस teaching को वो exemplify कर रहे हैं behavior. तो जो disciples को वो बात समझ में आती है, जो वो सुनते हैं उनकी बात की, इस स्थिति में भी हमारे आचार्य, हमारे गुरु ये कह रहे हैं, obviously whatever he has taught is valid, and we can see that, and that softens them, that creates more shraddha in them, and therefore गुरुजी कह रहे हैं कि भाई प्रोटेस्ट नहीं करना है, रोना धोना नहीं है, तो लेट अस ट्राई आवर बेस्ट टू फॉलो दैट। ऑन द अदर हैंड जो लोग उस बात को उतना नहीं समझ पाते, इट्स एग्जैक्टली लाइक द सीन इन द महापरिनिब्बाण सुत्ता, where some monks are crying and wailing, the fully enlightened ones are just sitting quietly and telling them, क्यों रो रहे हो भाई, body is impermanent, हमने भगवान ने सिखाया है ना। So you can see exact parallel to that in the behavior of the disciples. Those who have got established in that perception and who have faith in the teacher, they respond in a particular way because of that perception. और जो उनकी जो ज्ञान है वो तो वही है, चक्षु विज्ञान और श्रोत विज्ञान प्रोमिनेंट है। चक्षु विज्ञान पे आधार पे अप्रिय वेदना होगी जी, बट श्रोत विज्ञान के आधार पे न्यूट्रल वेदना है। एंड दोज हु गिव प्रोमिनेंस टू दैट, बिकॉज श्रोत विज्ञान के पीछे परसेप्शन एक है, इट इज गॉड्स डूइंग, उसको जो प्रोमिनेंस देते हैं, द अदर थिंग डज नॉट मैटर फॉर देम, सो दे कैन बी इक्वानिमस। Those who are not able to give prominence to it because of the strong attachment to the form of the teacher and the enormous suffering which they are seeing, जिनका काया विज्ञान जो जो चक्षु विज्ञान strong है, चक्षु वेदना strong है, चक्षु perception strong है कि हमारे टीचर को torture किया जा रहा है, they are obviously feeling great suffering, enormous suffering, and that श्रोत विज्ञान का impact, श्रोत perception का impact बहुत कम होगा। So that's the way I look at it. On the other hand, the soldiers, for them, they are just following the orders of this, and some of them were known to be strong believers in the orders कि हाँ ये तो बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, and they must be really feeling कि जो हमको करने को कहा गया हमने वो बिल्कुल dutifully ठीक से किया, and this person who is a kafir, he is feeling getting the punishment he deserves, so they have a justification, they have a perception that justifies that, and therefore they must be feeling pleasant feelings. That's how I look at the whole thing. Very briefly I'm putting it. अब इसमें अगर आपसे कुछ comment करना हो तो please comment. So what is the sanya of the guru sant की क्या sanya है? Dhamma sanya. It is dhamma sanya, that perception, that idea that जो भगवान करते हैं वो ऐसा करते हैं। So इतना strong है, वो idea इतना strong है कि उस idea के अनुसार वो अपने experience को absorb कर रहे हैं। So and another thing, there were so many Vigyans which operated, like Chakku Vigyan. You said you have to give importance to the prominent. Okay, just correct me if I'm. Yeah. So let me. So if this is the case, everything was operating together as such, or हर एक विज्ञान के आधार पर the perception will arise, or it's based on everything. Then there is a certain perception which is formed. क्योंकि एक टाइम पर तुमको बुलाया गया है, कहा गया है, and then the torture हुआ है बॉडी में. So I just wanted to understand, just for understanding sake, when there is a discussion. Otherwise, in general, सब कुछ एक साथ में होता है. But since we are like dissecting and just giving importance to it, तो क्या वहाँ पे क्या prominent चीज हो रही है आपके विचार? किसके बात कर रहे हैं आप? गुरुदेव जी की बात कर रहे हैं? गुरु अर्जुन देव जी की? To start with, yes. हाँ, उनके लिए क्या? उनके लिए most prominent experience क्या है? काया पे. That's it. Everything else is secondary. It doesn't matter. The disciples are crying, so he's consoling them. Compassion is arising and he's consoling them. जो soldiers हैं वो अपना काम कर रहे हैं. He understands. They are following his orders. He's such a wise person. ठीक है. There's no ill will towards them. They are not prominent inputs at that moment. Imagine the prominent input is the sand, hot sand falling on his body and the body burning from bottom. That is the prominent sank. बाकी सब चीजों का कहाँ महत्व रह जाएगा? ऐसी स्थिति में महत्व होगा क्या उनका? Just see.
No, sir, I'm not talking about that because you mentioned this prominent thing. He never went back and spoke about that. He said कि all the vinyan. इसलिए I was Yeah, yeah, that's what I'm saying. You see, Yeah. we have to understand. Of course, for him, he's hearing the words, so Shot Vinyan bhi jagega. He's seeing them, Chakshu Vinyan bhi jagega. But uske prati jo perception hai, they are my disciples, and he has a compassion, perceptionate for them. For soldiers, he is wise enough to see they are following their orders, and there is no ill will towards them. They are perception, they are soldiers following their orders. Period. So it does not create any strong Vedana in him. The strong Vedana arises primarily because of the strong effect of Kaya Sansparsh. Isn't it? So we are not denying कि बाकी नहीं हो रहे होंगे, but we are understanding what is going to be prominent and what is going to determine the behavior. Because a person is not going to have 5 different behaviors operating at a particular moment. Which कौन सी संज्ञा prominent है और उसके हिसाब से व्यवहार प्रकट होता है किसी भी क्षण में. जैसे मैंने इसलिए डिसाइपल्स के 2 क्लास बताए कि वो वहां से वो क्लियर हो जाता है कि एक क्लास के लिए श्रोत विज्ञान and Shota Sanya is prominent because they see and they understand this is the teaching of our masters, all the generations they have been teaching, and our teacher is exemplifying them. So that श्रद्धा बढ़ती है और वो कहते हैं नहीं हमको फॉलो करना चाहिए जो गुरु जी कह रहे हैं हमको फॉलो करना. That is their व्यवहार in accordance with that श्रद्धा. दूसरे लोग हैं उनके विचार में मन में श्रद्धा है, but the I consciousness is so causing so much of suffering because they are seeing their beloved teacher tortured. उनकी स्किन गिर रही है. So that has such a strong impact that they forget the teaching and all that at that moment. वो भी सुन रहे हैं, वो भी जानते हैं, उनकी श्रद्धा भी है, but उस श्रद्धा के अनुरूप बिहेवियर ना होके इस संज्ञा के हिसाब से बिहेवियर हो रहा है, and therefore they are crying. You know, that's how I understand it. Of course, you can increase the inputs and make it more complex. I'm trying to understand what are the most prominent things. And of course, the other things are also important, but they are also impinging. They may be hearing words of the soldiers, but the words of their teacher are important, not those words of those damn soldiers, whatever they are saying, they may be saying. They don't matter to them, disciples. The key thing is that's how I understand it. Of course, you can always have different opinion. No, sir, I'm not having different opinion. I just asked you for my own understanding. I have one more question. So when you talk about the Sant का जो perception आपने कहा धम्म संज्ञा, अब last में आपने कहा था कि like he disappeared, he vanished. Please, kindly don't give importance to that. Please, kindly. नहीं. What did I say? Listen. Listen, please. Did Buddha vanish when he died? Just listen my carefully. Kindly listen carefully. जो आप परसेप्शन बनाया आपने, मैं सुन रहा था ना, बीच में इंटरवीन करता हूँ ना, मैंने सुन रहा था आपकी बात कि वो कोई कह रहा था नैव संज्ञा नसंज्ञा वाले स्टेज पे थे. somebody was saying कि वो निरोध का अनुभव कर रहे थे. निरोध का मतलब ये थोड़ा कि बॉडी डिसअपियर हो जाएगी. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. भगवान जो है ये he practiced all the 7 jhanas upward, downward and came to 4th jhana and then left the body. Body was there. It doesn't disappear. So when it is said in the story that he was not traceable, that may have so many implications. We don't get into that. We don't form opinion based on that event. That is I just completed the story for you. कि उसके बाद उनको नदी में ले जाया गया and so that's the day on 16th June he was taken to the river, and that is observed as the Shahidi Divas in the Sikh tradition since then. Okay, so that was just probably my mistake. I shouldn't have said it. Probably I could have omitted it, but you know that for sake of completeness, I just mentioned it that they couldn't torture him any further. That was the idea to mention. So based on that, to find a person, if somebody says based on that, since he vanished, therefore he must have experienced Nirodh, that's not a proper understanding of Nirodh. That's what I'm trying to say. Okay. Now,
I still want to ask you one more question. Go ahead. No So problem. when you're saying at mental level, he didn't have any kind of an unpleasant feeling as such. Obviously, bodily pain would have been there because he was tortured and everything. Perception was Dhamma Sanya. So does perception and Vedana reciprocal relation है? तो मुझे सिर्फ एक क्लैरिटी चाहिए था कि the perception keeps changing. तो he had the son had the perception कि सब कुछ भगवान का है, ठीक है. So there was a strong attachment as such to this, or it's a fate which made him had this perception as such, because we were still not able to come to a conclusion क्योंकि बहुत सारे discussion हुआ था. इसलिए we need your help. आप कृपया उस डिस्कशन को भूल जाइए. जो मैं कह रहा हूँ उसमें त्रुटि निकालिए, उसमें कहिए हमको इसमें ये प्रॉब्लम है. उस डिस्कशन को अपनी जगह महत्व है, आप उसको दोबारा सुन सकते हैं आफ्टर अवर इंटरेक्शन. मोस्ट वेलकम. बट आप ये बताइए जो मैं कह रहा हूँ उसमें आपको कहाँ दिक्कत हो रही है समझने में, देन आई विल आंसर. अब आप कहेंगे उनको उनके साथ अटैच थे, तो फिर श्रद्धा को क्या कहेंगे? श्रद्धा इज ए फर्स्ट इंद्रिय. Are we attached to Buddha when we chant Buddha's names every day? So we have to find out for ourselves. We can verify the meaning of Shraddha and the meaning of attachment. They look similar, but they're different. They have a different flavor altogether. We know it. So you have to figure it out. No? So you have to figure it out on the basis of your own experience. हमारे मन में भी तो श्रद्धा है भगवान बुद्ध के प्रति, और हो सकता है किसी और के प्रति भी हो, ऐसी कोई बात नहीं. There's no problem. But does it make us attached to him or attached to the teachings? I keep on saying यार ये समझ ही नहीं आती टीचिंग. तो ये जो मैंने आपसे सारा कहा संन्या के बारे में, बार बार कहा, ये मैं अपना इंटरप्रिटेशन दे रहा हूँ क्योंकि टीचिंग में कहीं कुछ इसका इतना डिटेल इंटरप्रिटेशन नहीं है. और मैं क्यों दे रहा हूँ? तो मुझे समझ में ठीक से आए और मुझे पता चले किस संन्या में मेरी कमजोरी है, कौन सी संन्या मेरी दुख देने वाली संन्या और कौन सी संन्या मेरी आगे बढ़ाने वाली. This I'll discuss tomorrow in the evening also. Again, trying to wind up with this whole thing. There are perceptions which can lead to suffering. हाँ जी बोलिए. आपकी बात बिल्कुल समझ में आ रही है कि धम्म संज्ञा की ही क्लास में आएगी जो भी हो, लेकिन जो एक प्रोमिनेंट विचार ये मन में आता है कि शायद वो इतना ऊपर उठ चुके थे संज्ञाओं के कि शायद उनका वो संज्ञा निरोध करने में भी सफल हो चुके हों. मैं आपसे निवेदन करूंगा, काइंडली डोंट पुल डाउन संज्ञा निरोध टू दैट. दैट्स नॉट फेयर. मैं कई बार कह चुका हूँ संज्ञा निरोध इज अ स्टेट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ निब्बाना. काइंडली सी दैट. तो निरोध शब्द का बहुत केयरफुली यूज करना चाहिए. हाँ जी, बिल्कुल नहीं यूज करा. वी शुड नॉट यूज इट in that loose sense. Nirodh does not mean stopping, and इस संज्ञा will never stop. हमको लगता है कि संज्ञा stop हो गई, ऐसा नहीं है. We are in delusion. We are being negligent. We are being non-mindful. That's it. That's an ideal which we can't reach. Nirodh is Nirodh of Sanya or Nirodh of Vedana or Nirodh of Vijnana are the states only experienced. Kindly listen my words carefully. They are only experienced by Arhant when he is experiencing Nirodh Arhant Phal Samadhi. Not that he is always in that state. No. So only during that limited duration, when Arhant is experiencing Nirodh Phal Samapatti or Arhant Phal Samapatti or experiencing Nibbana in simple words, then all the senses are not operative, including mind is not operative. There is just the experience which is being experienced by the unmanifest consciousness. Anidasana Vigya. That's how I understand it on the basis of a wide reading, discussion, and I don't know how many. So this is the my understanding, and I think it is in this case I can say it is born out from the literature. It's not purely my way of interpretation. There is a canonical basis of it. So we should, I would request you to kindly see that, and if there dispel any doubts about it, if there are. So we should not say that
he must be experiencing Nirodha. No, it's not. हाँ जी, आपने हाथ उठाया सुरेंद्र जी। जी सर, सर मैं सोल्जर्स की वेदना पे मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो परसीव ऑर्डर मिले, परसीव करके आए होंगे कि टॉर्चर करेंगे तो वो दुखी होंगे, उनको दुख देखने को मिलेगा, मतलब जो टॉर्चर करने पे उनको अच्छा लगेगा। तो बट जो गुरुजी चैंट कर रहे थे तो उनके चेहरे पे कहीं दुख नजर नहीं आया, अगर आया पे आया तो शायद कुछ सोल्जर्स को बुरा लगा, तो वो खुश ना हो, कुछ maybe I can't say for sure. Maybe, but I presume that seeing the skin burning and falling down, that would be. I mean, one can imagine anything. You can't really say for sure. There are stories of हमने जो किताब पढ़ी थी ना उनकी, क्या नाम था उनका, एक मिनट है ना, जो ऑस्ट्रिच से बचे हुए साइकेट्रिस्ट थे, उनका नाम फिर मैं भूल रहा हूँ उसमें, विक्टर फ्रैंकल। हाँ, उनका जो अकाउंट है विक्टर फ्रैंकल का, वो बताते हैं कि जो एसएस के सोल्जर्स थे, जो नाजी सोल्जर एसएस ग्रुप के थे, व्हिच आर सपोज्ड टू बी स्पेशल special soldiers meant for torturing those people and taking them to the gas chamber or killing them. He says even some of them develop compassion. So it can happen. Some of them, a few of them. And when they saw somebody, some child, in hungry and crying, so गुस्से में आगे कुछ आगे ब्राइट दे दी, चल. Now, it's not that human beings are all like that. In fact, the whole story of Oscar Schindler, आपने सुना होगा, उसका फिल्म बनी थी, is a story of transformation of Sanya. He actually he joined a Nazi party as a spy. And he went to Poland कि उसको कंपनी को acquire करके पैसा कमाऊंगा यार. And when he saw those scenes of children and everything, and his heart melted. And he saved some 1,200 people. And he became bankrupt, kept on bribing the soldiers and so generals and everyone. कि इसको नहीं मारो, इसको मुझे इसलिए चाहिए, ये मुझे इसलिए चाहिए, ये मुझे इसलिए चाहिए. That's a complete transformation just by seeing suffering, because some seeds of compassion were there. So that can happen with any soldier actually. Maybe it could have happened with their soldiers. You can't deny that. I can't say no. There's no way I can say that. सर फिर ये जो हार्ट मेल्ट होता है, ये क्या है? क्योंकि हार्ट तो मेल्ट होता है, इसी को कंपैशन कहते हैं, करुणा इसी को कहते हैं. इसको हम कहाँ डालें? Where do we? Karuna is a mental response to a situation. You are seeing suffering, and suffering पे response क्या होगा? करुणा जागेगी अगर चित्त में कुछ शुद्धि है. अगर परसेप्शन, थोड़ा सा परसेप्शन ये है कि ये भी मेरे जैसा ह्यूमन बीइंग है. Of course, there is always a perception behind everything. It's not possible that there will be no perception. How does compassion arise? Why should a compassion arise? Why? Yes. Because there is a perception. Because there is living. हमारा compassion किसी पहाड़ के प्रति क्यों नहीं जागता? It's with a living being. Mostly with a living being. ये living being जो है is getting hurt. भगवान के जिस दम्पति में बहुत वर्ष आते हैं ना, दूसरे को अपनी जैसे मान के उपना देते हुए, तब then you can't do hurt and hurt others. If you so that means जो हम that is the perception. Sanya. Yeah, sanya is that. That's the sanya. How you look at others. Yeah, how you look at other beings. You look at them as adversary. You can look at them as friends, or you look at them as just as I am a human being, he is also a human being. And it goes further. Just as I am a living being, a dog is also a living being. Just as I experience pain when somebody kicks me, dog also experiences pain when it is kicked. And then a different relationship emerges because of that perception. So sir, Sanya mein category mein ye, this is also part of it? Oh, it is a Dhamma Sanya, understanding के आधार पे है ना ये तो. लेकिन जो हार्ट में भी तो like you feel something. You feel there is a response. That is a sankhara. That is how we respond. Even if for compassion,
you have that. Compassion You know, is also a mental factor. It's a response. It is a sankhara, a wholesome sankhara. Sankharas are not all bad. Sankhara means how do you respond to sense impressions. विज्ञान जागा, वेदना जागी संज्ञा के साथ, अब वेदना को कैसे रिस्पॉन्ड करना है. सो वेदना तक तो तीनों कैटेगरीज में आएगा और फिर उसके बाद में जो संज्ञा होगी वो संखारा होगा. Yeah, that will be governed by the Vedana and the perception. Sanya and Vedana together govern what will be the sankhara. How will I respond to the situation? Okay. And now, if the sankhara is prominent, Vedana becomes mind. It doesn't become insignificant. As in case of the Gurudev, his feelings may be unpleasant, or maybe they are not so unpleasant because of the sanya being strong. If you take something as a gift, feelings may not be of the same kind as if you take it as a hostile thing. But still, the feeling are likely to be unpleasant. But the perception is so strong that this is the gift of God that overrides everything. That's why I'm so much stressing on perception, because perception determines the behavior in a very strong way. Vedana determines the behavior in most of us because of our strong latent tendencies. So हम वेदना के शंगुल से निकल नहीं पाते हैं because हमारी latent tendency इतनी ज़्यादा है. प्रिय वेदना को हमें तो प्रिय ही चाहिए, अप्रिय नहीं होनी चाहिए. लेकिन अगर हमारा perception इतना strong है कि तो हम अप्रिय वेदना को इग्नोर कर देंगे. कोई काम करता है, जैसे हम देखते हैं for a noble cause, he's working day and night. It doesn't feel bad about it. He doesn't react badly to it because his perception is, I'm doing a noble job. And you must have experienced something when you do something which is noble. Body ki tiredness, thakan, bhook, pyas, nothing matters. They are unpleasant vedanas. They give unpleasant vedana aati hai na usse to. Bhook lag rahi hai, thakan ho rahi hai, but it just doesn't matter. The perception is so strong, this should be done. This is a noble thing. Finished. So you can see that's how we analyze ourselves. Because हम जितना अपने को analyze करेंगे इस paradigm में, इस 5 के हिसाब से, तो वो clear होता चला जाएगा कि किस तरह से perception dominant influence है हमारे life में. अगर हम उसका, especially when it is a noble person, it can be also ignoble. That can also be maybe attached to it so strongly that we don't care about anybody. The crime and all kinds of terrorism happens because of that perception of a different kind. So the perceptual clarity, if I may use that word, or confidence or attachment, that can overwhelm the effects of Vedana. So that's why perception plays a very crucial role in our life. So that's why I'm suggesting, let us try to be more and more cognizant of it and see what kind of perception leads to increase of suffering and what kind of perception leads to decrease of suffering. That's it. इसीलिए हम इतना उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं. दिक्कत तो जैसे मैंने कहा वो छिपा हुआ है तो पता ही नहीं चलता. हमको फर्स्ट से दिखता है और वेदना दिखती है, उसके पीछे छुपा हुआ जो संज्ञा है वो समझ में नहीं आती, नोटिस में नहीं आ पाती, तो दिक्कत हो जाती है. So in order to live, our day-to-day life में, you are required not just analytical mind. Till the time you get your heart open, you feel, we don't like वो शायद connection cut हो जाता है कभी-कभी, और फिर उसके बाद में then you are just doing what you are doing as a mechanically. But क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि आज ये चीज, हाँ जी. Then what we should do, it happens with all of us, we forget. But then when we meditate on that. इसीलिए सुबह शाम की साधना का अभ्यास रखा गया कि आज मैंने मैकेनिकली काम कर दिया, सब कुछ भूल गया. मैं संज्ञा क्या है, वेदना क्या है, सब कुछ भूल गया. उसने कुछ कहा और मैंने उसको सुना दी. Now I sit peacefully and I sit and meditate, calm down my mind. I recreate that scene and understand, अच्छा क्या फर्स्ट था,
कौन सा विज्ञान जागा, कौन सी वेदना जागी, क्या मेरा परसेप्शन था और उसके कारण क्या हुआ कि मैं सजग ही नहीं रह गया, मैंने रिएक्ट इस तरह से कर दिया। वैसे तो होता है हर समय, उस समय नहीं कर पाए वो ठीक है, बट लेटर वी कैन डू दैट। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस प्रैक्टिस। अभी हमारे सामने तो नहीं हो रहा है ये सब जो हम कर रहे हैं, जो सुबह किया या जो अभी किया, हम तो उसको इमेजिन कर रहे हैं, अपने मन में विजुअलाइज कर रहे हैं, क्योंकि उसका इम्पैक्ट होता है हमारे लाइफ में। इफ यू आर सेंसिटिव एंड इफ यू कैन विजुअलाइज प्रॉपरली एंड एम्पैथाइज, उसका बहुत फर्क पड़ता है, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, एंड दैट्स हाउ वी कैन चेंज अवर परसेप्शंस। हमारे परसेप्शन अगर आप देखें अपने जीवन में, बचपन से लेकर अब तक कितने चेंजेस हो गए हैं परसेप्शन में, just based on our experiences, based on our learning, based on our understanding of various kinds, and that's how, and they modulate our life, हमारा behavior बदलता जाता है ना, so we can be cognizant of it. Right. Thank you. I think it's already 8:45 almost. So may I ask a very small question? Okay, small one. Yes, yeah. Very small, sir. Sir, I mean, I couldn't resist, though it was academic, but I thought I'll ask, like you mentioned, the cessation is experienced only by an arhat in the experience of Nibbana. Just randomly it struck me that Sotapanna, I had heard, has got a glimpse of Nibbana also. Is that true? There are different opinions about it, so let's not. Yeah, they say there's an experience. What exactly it is that? What do we mean by cessation? It's a partial cessation, not a complete cessation. That's it. Okay, thank you, sir. It's something called, in the Buddha's teaching, there's no mention of partial cessation. Always avidyayatve ases virag nirodha. Avidya का शेष रहित, कुछ शेष नहीं बचा, उसको उन्होंने निरोध कहा है। अब हमने उसको समझ के लिए कहा कि पार्शियल निरोध हुआ है, क्योंकि कुछ संयोजन कट गए हैं। फिर आगे बढ़े जो अनागामी है, उस लेवल पे कामराग और परीक्षा, ये